Chapter number 9, differential equations. This is very simple chapter in compared to integration. Here in the first half of the chapter we are going to use the concept of derivatives, that's a differentiation, and the other half of this chapter we are going to use the concept of integration, remember. But very simple chapter. So here let's start with first what we mean by differential equation. We want to write what is a differential equation. That's the first question. Definition of differential equation. We already come across number of times through such differential equations without giving the name differential equation. So here a differential equation is nothing but an equation. Equation means what? An expression about variables, that's called an equation. An equation involving mainly derivatives, remember. Derivatives means what? dy by dx, d square y by dx squared, and so on. That is like this, dy by dx, d square y by dx squared, and so on. Okay? An equation involving derivatives is called differential equation. Finished. Is called differential equation. Is called differential equation. Right. So, very simple definition. What's a differential equation? Any equation which contains the derivative. Any equation which has some derivatives. For example, you take this dy by dx plus x equals to y. So this is a differential equation. One more, I can take like this, y double dash plus 2y dash plus 1 equals to 0. So this is a differential equation because it contains derivative. Y double dash, you know, it is d square y by dx squared, you know very well. Fine. One more, if I take this 3 times d cube y by dx cube plus 2 times d square y by dx squared plus x equals to y. This is also a differential equation, remember. An equation that contains some derivatives is called a differential equation. Equation involving derivatives. कोई भी इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव्स दिख रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. In differentiation chapters you had number of such questions if you remember. Right? One more, let me write this for example. X into y dash plus y equals to 0. This is also a differential equation. Any equation which contains some derivative is called a differential equation. I repeat. Any equation which has some derivatives is called a differential equation. Okay? Now here the first point is about order of a differential equation. Order of a differential equation. DIFF means differential equation. What is the order of a differential equation? That's the first thing we want to write. So, what's order? We define in this way. Order is the highest order derivative, the highest order derivative present in the given differential equation. The highest order derivative present in the given equation. Present in the given differential equation. What's order? Differential equation must have some derivatives. इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स है उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर का आप पिकअप कर लो. दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर. I repeat,
लाइक दिस. सपोज मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. कितने डेरिवेटिव्स इसमें प्रेजेंट है? 2. दिस इज कॉल्ड dy by dx which is the first order derivative. This is d square y by dx square second order derivative. तो which is highest order? This one. इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2. इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं. आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यू नो. ओके, सो व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? द ऑर्डर इक्वल्स टू 2. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation, that's known as order of the differential equation. जितने भी derivatives हैं उसमें आपको highest order का कौन सा दिख रहा है? That's called order of the differential equation. Look at this. Suppose आप ये देखो, here d square y by dx square d cube y by dx cube, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है. सो हाईएस्ट ऑर्डर का ये हुआ. So the order of the differential equation is 3 because highest order derivative is 3. Look at this. Here dy by dx d square by dx square. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 हुआ. ऑर्डर इक्वल्स टू 2 because highest order ये है. इसमें तो एक ही है, that is dy by dx, और इसका ऑर्डर 1 है. So what's the order of this differential equation? 1. This is called the first order differential equation. This is called the second order differential equation. This is called the third order differential equation. इसमें वापस एक ही है. So here order equals to 1. Clear? Very simple. Very very simple. जितने भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं उसमें से किसका ऑर्डर हाईएस्ट है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन गया. फिनिश्ड. फाइन. ओके, दैट्स वन थिंग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज degree of the differential equation. We want to write degree, which is also called sometimes exponent or the power of the differential equation. So let me write that. Degree of the differential equation. Degree, or it is also called sometimes power of the differential equation. Degree or the power of the differential equation. We want to write degree or the power of the differential equation. Now what is that? Alright, the power, or you can write exponent. किसका आपको exponent और power देखना है? You know power means the degree. The power or exponent of the highest order derivative present in the differential equation. Highest order derivative present in the differential equation. With this condition, a important condition, if it is expressed as a polynomial of derivatives. Expressed means what? Written as a polynomial of derivative. Written as a polynomial of derivatives. Okay, this is very important here. Remember, in degree of the differential equation, वो polynomial होना चाहिए. किसका polynomial होना चाहिए? Derivatives का होना चाहिए. What I mean by this, I'll try to explain you. Okay, let me explain you this first, then I'll come to this point. See, if I write like this, x square plus 2x plus 3, so this is called polynomial in x. You know, polynomial in x. क्या होता है इसमें? x का पॉजिटिव पावर ही होता है. If I write x raised to 1 by 2 plus x cube plus x raised to 4, is it the polynomial in x? No, not a polynomial. Not a polynomial, remember. This is not a polynomial. Fine. फिर आप जानते हैं polynomial में ऐसा भी नहीं होता. If I write x cube plus sin x plus 2, is this polynomial in x? No, not a polynomial. Not a polynomial. ये polynomial नहीं है. क्यों? Why it is not a polynomial? Because इसमें अंदर sin आ गया. x alone ही होना चाहिए, इसका किसी के साथ combination नहीं होना चाहिए. Then it is called polynomial in x. Remember. Getting me?
x should be alone. If I have this, for example, x raised to 4 plus 1 by 2x square plus 3. Is this polynomial in x? Yes, this is a polynomial in x. Polynomial in x. Why it's a polynomial in x? अब देखो x के integer power ही होना चाहिए. Not only integer, positive integer power होना चाहिए. So this is called polynomial in x. Right? If I write x raised to 3 by 2 plus x square minus 1. Is it polynomial in x? No. Not a polynomial, remember. Not a polynomial. This is not a polynomial. Fine. Not a polynomial in x. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का fractional power है और x का किसी ट्रिगो या लॉग के साथ कंपोजिशन नहीं होना चाहिए. If I write x raised to 4 plus 3x square plus e raised to x. Is it polynomial in x? No, not a polynomial. क्यों? क्योंकि देखो x किसके साथ है? Exponential के साथ है. Understood? Now what do you mean by derivatives expressed as a polynomial of derivatives? Okay, what's the meaning of this? That means you should have like this square by dx square, the whole cube. So this looks like x plus dy by dx the whole square plus x equals to y, like this. अब देखो इसमें कहीं पे भी ट्रिगो भी नहीं है, कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल भी नहीं है और कहीं पे भी लॉग भी नहीं है. राइट? सो इट मीन्स दैट dy by dx should not be composed with, composed means what? Combination. Should not be composed with trigo, exponential और log. इसके साथ composition नहीं होना चाहिए. If I have like this, like sine of dy by dx, is it polynomial in dy by dx? No, this is not a polynomial in dy by dx. I hope what I'm trying to tell you is clear to you. Purely dy by dx का integer powers ही होना चाहिए, fractional power भी नहीं होना चाहिए. Remember, dy by dx या d square by dx square. So I should write here polynomial of derivatives. कोई भी derivatives चलेगा. Remember, polynomial means what? पॉजिटिव पावर्स ही होना चाहिए डेरिवेटिव्स का, नंबर 1. नंबर 2, dy by dx should not be composed with trigo, exponential or log. Fine, this is a polynomial in derivatives, remember. Okay, now इसका मेरे को डिग्री लिखना है. What's the degree of this that I want to write? Okay, what's the degree? दैट इज, आप इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखो, ए है, इसका पावर कितना है 3. ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विच इज हाईएस्ट. इसका पावर देखो क्या लिखा है, पावर और एक्सपोनेंट, सो विच इज 3. सो डिग्री इज 3. फाइन, क्लियर, अंडरस्टूड. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. लुक एट दिस. देखो ये एक और ले रहा हूँ, सेकेंड एग्जांपल. See, d square y by dx square plus 3 into dy by dx plus 3x equals to y. Remember, this is a polynomial in derivatives. Derivative जितने भी उसमें एक भी में fractional power भी नहीं है. Okay, let me just rewrite like this. I'm sorry, I'll write like this. मैं यहाँ पे whole square कर दूँ. Okay. Now here, look at this. जितने भी डेरिवेटिव्स है सबका इंटीजर पावर्स आर. यू एग्रीड? नंबर 1, dy by dx का एक भी ट्रिगो, लॉग या साइन के साथ कंपोजिशन नहीं है, सो इट्स अ पॉलिनोमियल इन dy by dx. रिमेंबर, आई रिपीट, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन dy by dx. अब क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है. विच इज़ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? दैट इज दिस. इसका पावर देखो, नथिंग मीन्स पावर इज 1, सो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, डिग्री 1 हो गया. आपने जल्दी में 2 लिख दिया, दैट इज रॉन्ग. रिमेंबर, आपको किसका एक्सपोनेंट देखना है. लुक एट द डेफिनेशन, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. रिमेंबर, और किसी का नहीं देखना है. यहाँ पे ए हाईएस्ट है, बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ए है. क्लियर, अंडरस्टूड. ऑर्डर
ऑर्डर में कुछ नहीं देखना है, उसमें पॉलिनोमियल कुछ नहीं देखना है. ऑर्डर विल बी व्हाट? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज 2. Clear? Understood? Okay, I'll write one more. Let's write one more. I'll write, for example, d cube y by dx cube the whole square, d square y by dx square the whole raised to 4 plus x equals to 2y. I hope you are clear that this is a polynomial in dy by dx. Why? Two things. Number one, अब देखो हर एक डेरिवेटिव्स का पॉजिटिव पावर्स ही है 2 4. नंबर वन, फ्रैक्शनल नहीं है. और डी वाई बाई डी एक्स या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्यूब का कंपोजिशन ट्रिगो लॉग या एक्सपोनेंशियल के साथ नहीं है. सो यू कैन फाइंड डिग्री ऑफ दिस. ओके, सो व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस? किसका आपका एक्सपोनेंट देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका एक्सपोनेंट 2. अगर जल्दी में आपने 4 लिख दिया तो इट्स रॉन्ग. रिमेंबर, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका एक्सपोनेंट देखना है. व्हाट्स द ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, तो वो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, दैट इज 3. क्लियर? चलो कम टू दिस. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log of dy by dx plus 1 equals to 0. So, have you noticed that this is not a polynomial in dy by dx? क्योंकि dy by dx किसके साथ composed है? log के साथ. Not a polynomial in dy by dx. Not a polynomial in dy by dx. रिमेंबर, ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल ऑफ dy by dx में कभी log का dy by dx के साथ कंपोजिशन नहीं होता है. आई रिपीट, dy by dx और d square y by dx, d square y by dx square should not be composed with log, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो. कंपोजिशन आप जानते, प्रोडक्ट की बात नहीं करना हूँ. सो देयरफॉर डिग्री नॉट डिफाइंड. डिग्री नहीं मिलेगा इसका. डिग्री नॉट डिफाइंड. यू कैन नॉट फाइंड द डिग्री. कैन यू फाइंड द ऑर्डर? येस. ऑर्डर में कोई कंडीशन नहीं है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज 2. ऑर्डर में कोई कंडीशन ही नहीं है. फाइन. नाउ सपोज आई हैव दिस. लुक एट दिस. रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू y into d square y by dx square. See, what's the problem here? Is this polynomial in dy by dx? The answer is no, क्योंकि dy by dx का पावर कितना है? हाफ. फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगा. But at least here you can square it and you can make it free from that square root and you can convert into polynomial. So I'm squaring on both the sides. So what is the right hand side? Y square into, right hand side would be y square into d square y by dx square the whole square. How I got this? Just by squaring. Now you can see that this is a purely polynomial in dy by dx. अब दोनों का पावर देखो dy by dx का. इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2. दोनों इंटीजर्स पावर हो गए. एक भी डेरिवेटिव लॉग, ट्रिगो या एक्सपोनेंशियल के साथ कंपोज नहीं है. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. रिमेंबर, पॉलिनोमियल इन dy by dx. So what's the degree here? डिग्री बोलो इसका कितना आएगा? 2 आएगा. क्यों? क्योंकि here हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसका एक्सपोनेंट 2 है. ऑर्डर इसमें तो कुछ देखना ही है. कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? 2. सो डिग्री 2, ऑर्डर 2. फाइन. वी गो टू दैट फर्स्ट पेज. देयर you know now how to write the degree. So here I'll write the degree. What's the degree here? This is already polynomial in dy by dx. So here degree is 1. This is already polynomial in dy by dx. So what's the degree? Here इसका पावर 1 है. रिमेंबर, इसलिए ये भी 1. इसका पावर भी 1 ही था, सो इसलिए 1 लिखा. What's the highest order डेरिवेटिव? ये जिसका ऑर्डर आप लिख रहे हैं ना, उसका पावर देखना है. तो यहाँ पे भी डिग्री 1 आएगा. फाइन. दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. किसका पावर देखना है? इसका 1. सो डिग्री इज 1 here. Clear? Order and degree. When you are finding degree, you need to be little careful. Remember, order में कुछ नहीं करना है. Just highest order derivative कौन सा है वो देख लो. Finished.
Understood? Chalo, now we go to exercise 9.1, that is just based on the degree and order of the given differential equations. There are how many differential equations? Around 12 differential equations, right? Okay, so I'm doing that. Have a look into the exercise. Let's see. See the first question. It's a differential equation because derivative is involved. D raised to 4 y by dx raised to 4 plus sin ट्रिगो है अंदर. इसका कंपोजिशन है, ये ऐसा नहीं है. रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. साइन इनटू नहीं है, ये कंपोजिशन है. यू नो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट. अंदर क्या है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है. सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स, नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. रिमेंबर, ये पॉलिनोमियल नहीं है. डिग्री के लिए कंडीशन चाहिए. सो व्हाट्स द कंक्लूजन? डिग्री नॉट डिफाइन. डिग्री नॉट डिफाइन. डिग्री के लिए पॉलिनोमियल होना ही चाहिए. रिमेंबर. एंड व्हाट्स द ऑर्डर? ऑर्डर में कुछ नहीं देखना है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लो, विच इज 4. सो ऑर्डर इज 4. फाइन, क्लियर? ओके. In MCQs this might be helpful, or in 1 mark or can be asked. Remember. Question number 2, derivatives are there. ds by dt the whole raised to 4 plus 3s d square s by dt square. It's a polynomial in derivatives. You can see ट्रिगो का कंपोजिशन भी नहीं है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा भी नहीं है, लॉग के साथ कंपोजिशन भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल के साथ कंपोजिशन नहीं है, और पावर इंटीजर ही है, पॉजिटिव. इसका पावर 1 है, इसका 4 है. रिमेंबर, what's the order? Highest order derivative present in this 2. So that's 2 here. D squared s by dt squared. And what's the degree? Degree would be what? जिसका order लिखा है इसका पावर लिख दो. कहाँ से order लिखा है? यहाँ से. इसका पावर 1. अगर आपने 4 लिख दिया तो it's wrong. Remember, exponent or the power of the highest order derivative. ये highest order derivative नहीं, ये है. Remember. चलो. Can you look at the third number? By writing the question you might have noticed d square by dx squared. इसका power positive integer. But अंदर देखो क्या है? Trigo is composed with dy by dx. So immediately order तो of course order क्या लिखेंगे? Highest order derivative. Order के लिए कोई constraint नहीं है. Remember. But what about degree here? For I'm sorry, this is fourth question. This is fourth. So what's the degree here? Degree would be degree not defined, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है dy by dx का. याद आया? वापस याद करवाऊँ. ट्रिगो एक्सपोनेंशियल लॉग शुड नॉट बी कंपोज्ड विथ dy by dx. अगर ऐसा होगा तो डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा. ये पॉलिनोमियल नहीं है. रिमेंबर, हम लोग वेरिएबल x में इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते. यू कैन नॉट कॉल दिस एज अ पॉलिनोमियल. रिमेंबर, this is not a polynomial in x, not a polynomial x. Polynomial x में purely x ही होना चाहिए with integer power. Remember. Okay. I suppose this was question number 3. What about second question? Let me do that. Second, y dash plus 5y. Very simple differential equation. Y dash means dy by dx. So order will be 1. और वो एक ही है और इसका एक्सपोनेंट 1 है तो डिग्री भी 1 हो गया. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. क्लियर? अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में आप लोग को? फिफ्थ वन, आप इक्वेशन देखो. अंदर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है. सो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर विल बी 2. व्हाट अबाउट डिग्री? व्हाट डू यू थिंक? डिग्री मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? In fifth question, what do you think? Shall we get the degree? The answer is yes. Remember, इसमें trigonometric function है but dy by dx के साथ composed नहीं है. Remember, alone है. So degree is possible and it is 1. क्यों? क्योंकि इसका पावर आपको देखना है. किसका? d square by dx squared का. What's the power of this one? It is 1. और ये cos x sin x है but these are composed with which one? X. So it is a polynomial. Remember, this is a polynomial in dy by dx. Remember. Clear? Don't get confused. Again I'm repeating, dy by dx
of sine ऐसा नहीं होना चाहिए. Remember, this will do. I can have equation like this also. देखो, sin x into d square y by dx squared. I can have like this, plus y equals to 1. Is this polynomial in dy by dx? The answer is yes. Fine. Okay. Chalo, next sixth number. You can see very easily that it's a very standard polynomial equation. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है वहाँ पे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y ट्रिपल डैश. सो ऑर्डर विल बी 3. ऑर्डर इज 3. लुक एट द इक्वेशन एंड इसका पावर कितना है? 2 है. सो डिग्री विल बी 2. वो 5 नहीं देखना है. लास्ट टर्म में जो 5 दिख रहा है वो नहीं लिखना है. रिमेंबर, आपको किसका पावर देखना है? जिस जहाँ से आपने ऑर्डर लिखा है इसका. रिमेंबर, so in the sixth question, order will be 3, degree is 2. I hope now this is clear to you. Seventh question, it's clearly polynomial in dy by dx. 3 y dash है, y double dash है, y triple dash है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? 3. सो ऑर्डर इज 3. और इसका एक्सपोनेंट कितना है? इसका एक्सपोनेंट है 1. सो डिग्री इज 1. इट्स अ पॉलिनोमियल. रिमेंबर. गो टू क्वेश्चन नंबर 8. हाँ देखो, 8th क्वेश्चन. y dash plus y equals to e raised to x. What do you think? Will it be polynomial? इसका order तो obvious है. Order is 1, right? Because this is a dy by dx. So order तो 1 है. What do you think in this question? Degree में क्या लग रहा है आपको? In 8th question, exponential is there, but it is composed with dy by dx. No, remember, it's not composed with dy by dx. So degree मिलेगा, and degree कितना होगा? 1 होगा. अगर ऐसा होता तो डिग्री नहीं मिलता. इफ इट इज लाइक दिस, e raised to dy by dx, अगर ऐसा होता तो डिग्री नॉट डिफाइन. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नाउ. हियर डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे dy by dx का कंपोजिशन एक्सपोनेंशियल के साथ हो गया. यहाँ पे तो x के साथ है. सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन dy by dx. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy by dx, देन देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइन. ऑर्डर तो मिलेगा, ऑर्डर विल बी 1. व्हाट अबाउट 9th and 10th? नाउ 9th and 10th you can answer very easily. 9th में I'll just write. What about 9th question? Their order will be 2 because d square by dx squared and degree is 1. 10th question में वो भी polynomial है. Remember again, यहाँ पे sin y है but sin of dy by dx नहीं है. Remember, sin y will do, right? So what's the order? Highest order derivative d square y by dx squared. Okay, and डिग्री कितना मिलेगा? जिसका ऑर्डर लिखा है उसका पावर लिख दो. डिग्री इज 1. क्लियर? अगर ऐसा होता तो आपको डिग्री नहीं मिलता. y डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस साइन ऑफ dy by dx. इफ इट इज लाइक दिस, देन what you would have written, degree is not defined. Your answer would be this. Fine, but here it's not that, remember. Okay, question number 11. What about 11th question? The degree of the differential equation. See, it's a same example. That's what I've given here. देखो, a polynomial नहीं है. Remember, sin का composition किसके साथ है? Sin का composition dy by dx के साथ है. So what's the correct answer there? D. The correct answer is D. Degree is not defined. Remember. Question number 12. What about 12th question? The order of the differential equation. Highest order derivative. Order कितना होगा इसका? Highest order derivative 2 है. So order will be 2. Clear? Okay. So this is about order and degree of the differential equation.